This will be 8 तारीख है। Hello, good evening. Hi, Bia. Good evening, everybody. All right, we'll just wait for another minute. I think people are still joining in. All right, super. If you can hear me, please type yes. Someone wants to tell you hi. Good evening, Abhishek. Super. All right. Okay, so let me share my screen and let's be on time because, of course. So what we're going to do today is that Hi, Farhana. we are going to, sorry, just a sec. Let me just fix this. All right. Hello. So we are going to kind of do the end of week analysis जैसे हम करते हैं, और उसके बाद हमने लास्ट संडे एक इवेंट किया था जिसपे हमने एंड ऑफ मंथ एनालिसिस किया था, तो उसको भी हम कुछ डिस्कस कर लेंगे. Whatever we think that is like at the place and you can start having a look at it, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. I think that'll make a lot of sense. All right, so let's begin. Let me share my screen. All right, so पहले तो first things first, let's do the end of week analysis, जिसपे मेरे पास I think roughly 17 stocks हैं जिनमें setups बन रहे हैं, either bullish or bearish. Lot of contra trade opportunities also. बहुत सारे weekly में bets बने हैं. Of course tick down ही हुआ है, so confirmation is still left and all that. So मैंने of course जैसे contra trend ज़्यादा नहीं लिया है, with the trend मैंने ज़्यादा उस पे फोकस किया है जैसे हम हर समय करते हैं. So without further ado, let's start doing this. All right, so let's begin. So सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज. ऑलराइट, सो आरती इंडस्ट्रीज रेड लोड वीकली ईएमए पे है, जहाँ पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है. लास्ट थर्सडे व्हिच इज yesterday was an uptick. Today was of course a holiday, so next we open is on a Monday. Now if you can see, बहुत अच्छा सेटअप है. लाइक मंथली सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ, इंगल्फिंग बुल एंड, लेकिन मंथली सीपीआर के ऊपर बंद भी नहीं हुआ. सो अगर हम इसके आर्ली चार्ट पे देखेंगे, वीकली कैंडल्स डोजी बना, इस बार हैमर बना, सो अगेन डिसेंट है. इफ यू कैन सी दैट्स योर वीकली सीपीआर. अगर गैप अप खुलता है या कोई आर्ली कैंडल इसके ऊपर बंद होता है, देन आई थिंक देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, देन दिस कैन गो फर्दर अपसाइड. लास्ट वीकली सीपीआर के ऊपर नहीं गया, इस बार वीकली सीपीआर नैरो है एंड जाने का पूरा चांस है. सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट एज वेल. ऑलराइट, फिर हम आते हैं अदानी एंटरप्राइज पे. नाउ अदानी एंटरप्राइज पे वी हैव अ बेरिश डाइवर्ट. नाउ यहाँ पे टिक डाउन होते होते लेकिन किसी का भी लो नहीं टूटा. फाइनली दिस वीक लो भी टूटा और इंगल्फिंग बेयर भी बना है. monthly CPR पे है. if you can see this, it is on the monthly CPR. so if it goes below, हो सकता है ये थोड़ा सा करेक्शन दे दे, क्योंकि ये पूरा पुअर कैंडल बना हुआ है. now of course weekly RSI is censoring it, so I'm not sure कितना आ जाएगा, लेकिन अगर 11 EMA तक भी आया, which is the monthly S1, which is decent enough. so I think use the hourly chart once again, और इसको यूज करके WCPR को यूज करके, इसका CPR यूज करके, मंथली CPR यूज करके, और ये वाले जो लेवल हमने लास्ट टाइम बनाए थे उसको यूज करके, इफ इट काइंड ऑफ ब्रेक्स डाउन यू कैन यूज a particular level as a target. But again yes, this ये लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वीकली में बेड है और डेली में भी एक बेड बना हुआ है. ऑलराइट, देन वी कम टू बालाजी, sorry बालाजी, बजाज फिनसर्व. Alright, so Bajaj Finserv is in the list. Last time भी था, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था यहाँ पे, बट यहाँ पे एक स्किपिंग द ट्रफ था, पर इस समय डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, मंथली S1 पे है. इनफैक्ट थर्सडे को एक ट्रेड बन सकता था अगर हम थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग की बात करें. आर्ली चार्ट में
यू कैन सी मंथली S1 से बाउंस हुआ है, मंथली CPR टारगेट होना चाहिए. Of course, narrow weekly CPR है, which is single line CPR. Now, this is a little tricky. But once again, because there is a daily bullish divergence at kind of a weekly, EMA, one can take advantage. Maybe अगर थोड़ा वेट करना है तो मंथली CPR के ऊपर जाने का भी वेट किया जा सकता है. देन हमारे पास है भारत फोर्ज. ना भारत फोर्ज इसलिए लिस्ट पे है, पहली बात है ये बहुत बड़ा ब्लैक कैंडल बनाया था इस बार 12 फरवरी वाला वीक में, बेरिश डाइवर्ट, ट्रिपल बेरिश डाइवर्ट, सेंसर्ड है व्हाटएवर, बट यस बनाया था. और इस डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ये जो बनाया था इसके बाद ये करेक्शन कर रहा है. सो इफ आई टेक अ रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर फॉल, एक बार देखते हैं तो 50% ऑलमोस्ट 61.8. हाँ, सो या तो ये वापस जाके यहाँ पे एक 61.8 में बेड बनाएगा डेली में, या और प्लस उसका रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, या ये यहाँ से गिर जाएगा. तो आप देख रहे हो कैसा गिरा, एंड दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव, राइट? दिस लुक्स लाइक करेक्शन ऑन द अपसाइड. नाउ इफ आई गो टू द आर्ली चार्ट, आप देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, मंथली CPR है, वीकली CPR है, वीकली CPR नैरो है. सो यू कैन यूज अ ब्रेकआउट. अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की ओर, सो यू कैन यूज अ ब्रेकआउट टेस्ट और ब्रेकआउट फॉलो थ्रू ऑन दिस टू एंटर ऑन द शॉर्ट साइड, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव राइट नाउ. ठीक है, नॉनदलेस क्या ये एक और पुश ऊपर देके फिर हो सकता है? यस हो सकता है. तो वो ट्रेंड लाइन को आप यूज कर सकते हो या CPR को यूज कर सकते हो, क्लोज एंड फॉलो थ्रू इफ यूड लाइक. फिर हम आते हैं BPCL पे. BPCL पे इफ यू कैन सी देयर इज अ हेड एंड शोल्डर हियर. ये अगेन इसी लिस्ट पे है क्योंकि यहाँ पे डेली में बेरिश डाइवर्जेंस था, ये में तक आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके फिर ये रिट्रेस हो रहा है. सो अगर मैंने इसका रिट्रेसमेंट बनाया तो यहाँ 61.8 तक आया, विच इज द मैजिक लेवल, विच इज एन इंटरेस्टिंग लेवल. हेड एंड शोल्डर बनने का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक तो आना ही चाहिए EMA तक, एंड ब्रेकआउट होता है तो नैरो CPR है, इसके नीचे जा सकता है. Again, this is all if, okay. So when we go to the hourly chart, you can see there's a bearish divergence at 012 daily में, अगर वो 012 होता, बट क्योंकि ये दोनों CPR के ऊपर है, सो इसको शॉर्ट सेल करना थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग हो जाएगा. बट वीकली नैरो CPR की ये नीचे आ जाएगा अब, अगर ये नीचे की ओर ही जाता है. नाउ यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज द ब्रेकआउट, गो बिलो द CPR काइंड ऑफ अ थिंग. सो मैं जो बोल रहा हूँ कि आप वीकली CPR को भी यूज कर सकते हो, या आप इसके नीचे जब जाएगा ऐसा कुछ यूज कर सकते हो. अगर HNS टूट गया और HNS का टारगेट आपको मिलता है, यू कैन ड्रॉ ऑल दैट एंड यूज ऑल दैट एज वेल. ठीक है, सो ये प्लान रहेगा BPCL के लिए भी, राइट? लेट मी जस्ट मेक दिस, sorry, just a sec, let me just visibility not on daily, right? ठीक है, सो BPCL इसीलिए हमारे लिस्ट पे है. इसके बाद हम आते हैं ब्रिटानिया. ब्रिटानिया वीकली में डोजीज बना रहा है, प्रीवियस हाई अच्छे से नहीं तोड़ पा रहा है कोई भी वीक का, यहाँ से चला वैसे ही चले जा रहा है, और यहाँ पे आके अब डोजीज बना रहा है. तो डोजीज बना रहा है एंड डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है. लास्ट टाइम भी था, इस बार S1 पे है, विच इज अ बेटर डाइवर्जेंस. और यहाँ पे अपटिक होके अगेन येस्टरडे कुड बी एन एंट्री डे. नाउ अगर हम आर्ली चार्ट को खोलते हैं, आर्ली चार्ट में देखो ये आपका नया वीकली CPR है, इसके ऊपर होगा अगर ये ऊपर की ओर जाएगा. यहाँ पे आर्ली में भी डाइवर्जेंस था, एंड ऑफ कोर्स द टारगेट शुड बी द मंथली CPR, एंड ऑफ कोर्स इफ इट्स अ री-एंट्री ट्रेड देन इट हैज टू ब्रेक द मंथली CPR एंड डू ऑल ऑफ दैट. तो आप वीकली CPR को यूज कर सकते हो बिकॉज S1 इज टू फार नाउ, एंड इफ इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. या आप ये सोच सकते हो कि अगर इसका टारगेट CPR तक है, मे बी ये मंथ यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ टाइम बिता के फिर जाए, वो भी हो सकता है. जैसे कि यू कैन एंटर आइदर वे. दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव. यू सी दिस एंटायर करेक्शन इन द डेली चार्ट, करेक्शन की तरह लग रहा है, ऊपर की ओर जाने का पॉसिबिलिटी है. S1 पे आ गया है, हो सकता है ऊपर चला जाए, बट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक ही मिलेगा. देन हम आते हैं बिरला सॉफ्ट पे. बिरला सॉफ्ट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, एंड नाउ यहाँ पे जाके बी सॉफ्ट में करेक्शन आया जो कि वैल्यू जोन तक आ गया वीकली चार्ट में. सो इफ आई जूम आउट, यहाँ से शुरू हुआ 11 EMA पहली बार आया है 11 के बियॉन्ड, विच इज 22 11 के जोन के आसपास, वैल्यू जोन पे. वहां पे यू हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस, अगेन S1 पे बना है. सो यू वुड लाइक टू आइदर MCPR नैरो है, इसका मतलब ट्रेंडिंग CPR है. आप देख रहे हो नैरो CPR, इसमें ट्रेंडिंग है. अगर ऊपर की ओर जाता है तो दिस माइट गिव यू अ रियली रियली गुड मूव. नाउ इन द hourly chart, now there's a again single line CPR kind of a setup है.
नैरो मंथली सीपीआर है डेफिनेटली, सो इवन इफ इट गोज अप, कोई गैप अप होता है या उसको फॉलो थ्रू देता है, आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क, जस्ट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस हियर। ऑफ कोर्स अगर वीकली हाई टूटता है, दैट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड कंफर्मेशन एज वेल। ऑलराइट, सो दिस शुड बी इन योर वॉच लिस्ट एज वेल फॉर नेक्स्ट वीक। फिर हम आते हैं दीपक नाइट्रेट पे। दीपक नाइट्रेट पे भी यू कैन सी इट्स एट वीकली ईएमए, वेल अप ट्रेंड एंड यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस है। नाउ लास्ट टाइम अपटिक हुआ था, उसका हाई नहीं टूटा, डाउन टिक हो गया। अगेन कल अपटिक हुआ है, लेकिन अगेन आप देखो कल का कैंडल अच्छा नहीं है। सो इफ यू सी माई अलर्ट इज सेट अबव द नैरो मंथली सीपीआर, S1 पे बनाए, अच्छा सेटअप लग रहा है, हो सकता है ऊपर की ओर चल जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैंडल हियर आई थिंक इट इज सेफ टू से व्हेन द प्राइसेस गो बियॉन्ड मंथली सीपीआर, दैट इज द बेस्ट place to enter. ठीक है, all right, and if you can see here as well, like there's a narrow weekly CPR of course, but yeah, my money will be above the monthly CPR if possible. ठीक है, because of the candle yesterday. Then we come to Dixon Technologies. Dixon is in the list because R1 पे daily में bed बना हुआ है with RSI permitting now as well. ये क्यों है लिस्ट में, मैं एक बार खाली देखना चाहता हूँ। मंथली R1 पे है, वीकली सीपीआर नैरो है। सो अगर वीकली सीपीआर नैरो है, यहाँ पे जाता है, देन यू नो यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट स्टिल द मंथली सीपीआर। आर्ली में भी बेरिश डाइवर्जेंस है। हाउएवर if you don't want to do the counter trend trade, you can avoid using this particular trading opportunity as well. Okay, but yes, because I could see something, I had this in the list. GMR Infra, again weekly, let me just remove these lines, I'm not sure why they are here. Weekly में EMA तक आया, so ऊपर गया, weekly में EMA तक आया है, और यहाँ पे you have a daily bullish divergence. You can see this at monthly CPR, narrow CPR, so नीचे बंद हुआ, follow through नहीं हुआ, you have a bullish Rami here with an uptick candle as well. So इसके ऊपर अगर जाता है, then we are good to go. Hourly chart में अगर हम देखें, तो this also gives you a very good interesting opportunity on the upside. So you can see अगर ये ऊपर CPR के ऊपर जाता है, I think that is one risk that is worth taking as well. So out of all these opportunities, जो भी आपको click करता है Monday को, you can take an opportunity in that. So GMR Infra इसीलिए, GMR Airports Infra इसीलिए लिस्ट पे है। ICICI Pru ये हमने डिस्कस किया था, I think if I'm not wrong, last week as well, and this week of course it broke, which is brilliant because अगर आपने enter नहीं किया तो this was the point to enter. Now of course even now if you've missed it, I think the only way to re-enter this is above the HNS or somewhere here, जब breakout होता है। Retest होगा कि नहीं होगा, I don't know, it doesn't feel like it, but you know, let's see what happens. So इसको मैं एक बार लिस्ट से हटा देता हूँ because fresh entry आपको नहीं मिलेगा इसमें अभी next week तो। LTTS, now LTTS again is in the list. First remember that it is near the resistance, ठीक है, वहां से आया EMA तक, वहां पे you have a bullish divergence. So a lot of IT stocks are giving you bullish divergences in the daily chart, right? फिर daily में bullish divergence है, ये hammer है, engulfing pull है, इसका high टूटा है, all that is all good. Let us go on to the hourly chart just to create a plan. हाँ, I think इसमें भी मुझे ये लगता है कि maybe this will spend like a lot of time here, but it is a narrow CPR, monthly CPR, it will give you a trend. So अगर ये ऊपर की ओर जाता है, then maybe WCPR यूज हो सकता है, या maybe just above monthly CPR buy हो सकता है। लेकिन I think अगर weekly high टूटता है which is above the weekly CPR, this can go higher, ठीक है। So one can use the WCPR also, I believe, but of course the safest is above monthly CPR, but मुझे लगता है कि ये हो सकता है, हो confirmation का जरूरत है, and that might come on Monday. अगर gap down खुलता है then nothing to do, but अगर ऐसा ऊपर की ओर जाता है and bullish market, broader market भी bullish रहता है, then this is something that you can have a look at. Then we have persistent systems, similar setup. Persistent system में एक advantage और भी है क्योंकि यहाँ पे gap है, gap up है, this could be a gap test पे you have a bullish divergence, uptick हुआ था, yesterday high टूटा है, लेकिन again you know was it enough, let's see. And you know you can see S1 पे daily chart पे there's a long wick below S1, so this basically means it's a lot of correction on Wednesday, है ना, नीचे गया और फिर ऊपर आ गया। नाउ यू हैव अ नैरो वीकली सीपीआर, यू कैन यूज दैट इफ यू वांट, बिकॉज यू हैव अ प्लान कि आपको क्या करना है, उसका प्लान है, तब आप जाके पिवट्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो a decent system here as well, which basically suggests कि IT stocks do have a certain zing to it right now.
Now polycap here is, if you can see, polycap fell right drastically and has kind of retraced back. So if I वहां पे ही retracement में there is a gap down. You see here there's a gap down here. वहां तक आया है, daily में bearish divergence बनाया है almost at R1 in the monthly CPR. Now if it kind of falls from here, this could again go back to such levels, you know. But again, you need to kind of follow the CPR method so that you understand this, you know, and that is how we do it. So let's go to the hourly chart quickly. hourly chart में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे R1 पे है almost. So if it kind of touches these levels and creates like another rejection and gives you an opportunity below weekly S1, this could be fantastic, you know, like these levels. इसके नीचे, then maybe first target, and then maybe if it goes beyond the monthly CPR, the the levels are lower. Let's see if we can draw a trend line here as well. I think यहाँ पे भी एक कोई wedge kind of a thing बन रहा है. So if you can kind of squeeze this out, you know, इसको ठीक से बनाएंगे, you know. So this is like the corrective wedge. So 0, 1, 2, 3, 3 पे, यहाँ पे 3 पे divergence daily में, and then looks good to go. Okay, so there is a setup, as you can see. The only thing is that keep it in your watch list, और अगर आपका trigger होता है, then I think this is something that you can use. So let me just fix this properly. Yeah. All right. Next is RBL Bank. Now RBL Bank is in the list because there was a bearish divergence pullback. Again, resistance pay. There's a bull candle here. So which basically suggests that the prices can go lower. You know, weekly chart देखिए, daily is a little noisy, but weekly में आप देख सकते हो कि ये, you know, यहाँ पे rejection फिर दे दिया. अगर weekly low टूटता है, then you know you can expect the prices to go further, you know, down. This is what it suggests, unless कुछ, you know, gap up ही खुल गया और पूरा breakout हो गया ऊपर की ओर, but it suggests that यहाँ से हो सकता है अगर weekly low टूटा, which is the momentum. अगर momentum है, then this could go lower. Then we have TCS. TCS again, resistance broken ऊपर की ओर. You can see beautiful monthly CPR भी ठीक है. You have a daily bullish divergence at CPR and follow through भी हो चुका है with a good candle as well. So closing above है, यहाँ पे एक trend line है. So what I mean by that is, अगर हम hourly chart खोलते हैं, so सारे IT stocks ऐसे ही कुछ setup दे रहे हैं. So there's like a kind of a trend line here, you know, lower highs के. So if it kind of breaks out and you have a, well, not the narrowest weekly CPR that I've seen, but you do have like, मेरे ख्याल से अगर पुल बैक देके देन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देन इट्स मच बेटर. बट अगेन गैप अप से ब्रेकआउट होता है, देन और भी अच्छा है. अगर ये लाइन गैप अप से ब्रेकआउट होता है, वेट फॉर द अर्ली कैंडल टू क्लोज एंड देन फॉलो थ्रू एंड ऑल दैट, एंड दैट माइट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी हियर आल्सो. ठीक है. देन यू हैव टेक महिंद्रा, अनदर आईटी स्टॉक. अगेन वीकली ईएमए, यू हैव अ डेली, नॉट द बेस्ट डाइवर्जेंस, शेडी डाइवर्जेंस, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रफ स्किप होता है. लेकिन यस, बिकॉज सेटअप है, करेक्टिव वेव भी दिख रहा है आपको नीचे की ओर, यू कुड प्रॉब्ली यूज दिस. आर्ली चार्ट को अगर खोलते हैं एक बार, हाँ, सो आई थिंक आई एम गोना, व्हाट आई डू इज आई विल रिमूव दिस फ्रॉम द लिस्ट बिकॉज इट सीम्स थोड़ा सा दूर है इसका, एंड डाइवर्जेंस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट. सो लेट मी रिमूव दैट. बट yes, rest of the 16 stocks are pretty good to go. All right, so you should have this in your list. Now I'm going to go and do Nifty, Bank Nifty. Then we are going to do some long-term stocks. In fact, let me do long-term stocks first. कुछ stocks मैंने यहाँ पे filter कर रखे हैं, उनमें से जितना हमने scan किया उसके बाद उसको हम discuss कर लेते हैं एक बार, फिर Nifty, Bank Nifty and फिर आपके stocks. Meanwhile, अगर आपको कोई stock के बारे में बात करना है तो chat box में please डाल दीजिए, तब तक हम discuss करते हैं. So biofuel chemicals, if you can see here, I can see, okay, we started with, so let me do monthly weekly charts. ठीक है, थोड़ा long term setups है. So long term setups हम जब भी discuss करते हैं, हम अपना time frame बढ़ा लेते हैं. So यहाँ पे भी यहाँ से शुरू हुआ था, divergence से ऊपर जा रहा है EMA पे, and इसको भी हमने discuss किया था. So ये क्योंकि इसका move अभी तक आया नहीं है, according to whatever setups we have, so ऐसा लगता है कि maybe this would do the do. Now of course, investing in such stocks, आपको हमेशा अपना फंडामेंटल कर लेना जिसमें मूवमेंट ऐसा होता है हैवर्ड, एंड इट्स नॉट लाइक ट्रेंडिंग और एट ईएमए एंड ऑल दैट. आप इसको थोड़ा सा फंडामेंटली समझ लेना.
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाथसुन एग्रो प्रोडक्ट। इसमें वीकली में sorry, let me open the monthly chart. So monthly में if you can see it started with a move here, came back to the EMAs. You have a bullish divergence in the weekly chart, which suggests it should go on the higher side as well. So technical analysis wise, this looks decent and looks like something that can give you a move on the upside. Then you have Tasty Bite. Now Tasty Bite again beautiful because ये में तक आया है. Last month poor candle था, लेकिन it has to kind of go and break the high and maybe create an engulfing bull here, something like that in the monthly chart. अब उसके लिए support करने के लिए weekly में you have a bullish divergence. Look at the stock. It beautifully follows the moving averages also when it's in trend. So it came back down, double bottom, वहाँ पे bullish divergences बने monthly chart में, एकदम ऊपर गया फिर नीचे आया. So let me just see if I can draw like a retracement कहाँ तक आया. So almost 61.8 तक, right? Then you have a bullish divergence. So if it goes higher, इसको daily chart में थोड़ा सा excuse me. So you can see, right, monthly CPR lower. इस बार narrow है, अगर इसके ऊपर चला जाता है, then there's a possibility this month could give you a trending month for this particular stock. So you can keep this in your list as well. फिर हमारे पास आता है मध्य भारत एग्रो मंथली EMA पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, सॉरी वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड दिस कुड सजेस्ट हायर प्राइसेस. नाउ ऑफ कोर्स आप देख सकते हो जब से ये स्टॉक born हुआ है, which is 21, it was 24 rupees, now it is at like 280 rupees. ये ऊपर गया, and this is the first time it has come back to the value zone. So maybe this could be like a re-entry trade kind of an opportunity, re-entry investment kind of an opportunity. Once again, do your fundamental analysis properly. Then we come to Sera Sanitary. Again ये में तक आ गए, bullish divergence है यहाँ पे. आप डेली चार्ट में जा सकते हो, डेली चार्ट में जाके आप इसके CPR को यूज कर सकते हो, हमेशा लोअर CPR. If it gives you higher CPR on this side, on the upside, then maybe you can enter on the upside. ठीक है, इसके पहले वाली स्टॉक को भी एक बार देख लेते हैं, हमने डेली चार्ट में नहीं देखा. इसका डेली चार्ट देख के फायदा नहीं है, कोई बात नहीं. देन वी कम टू अनुपम रसायन. ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, ये जब यहाँ से शायद यहाँ से बढ़ा था इस सपोर्ट लेवल से, when it had a bullish divergence in the weekly chart at monthly EMA, it went up. Again there is a resistance here, so it came back down. Again it has a bullish divergence. Now uptick भी हो गया, उसका high भी टूट गया, but you need to kind of play safe because इसका wick बहुत लंबा है, so if it can easily come back to test this and then go back up also. So try and enter at the best possible time if it gives you an opportunity. फिर हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक है. ये हमारे पास इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम का हाई जो 2016 में बना था, ये ब्रेकआउट हुआ है 2023 में. ये टेस्ट होने आया है, विच इज कॉल्ड CIP, विच इज ब्यूटीफुल. और टेस्ट में यहाँ पे वी हैव अ डिसेंट सेटअप, शेडी डाइवर्जेंस बट है. सो आइदर इट काइंड ऑफ ब्रेक्स दिस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन या इट ब्रेक्स द सपोर्ट लेवल, आइदर और कुछ होना जरूरी है. और उसके लिए हमें हम डेली चार्ट को भी यूज कर सकते हैं. So if you can see my arrow here also suggests that भाई अभी सिंगल लाइन CPR है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो अगर इसको तोड़ दे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा. वो अर्ली चार्ट में आपको और अच्छे से दिखेगा. So in the early chart you can see this yellow zone. Let me just make it bolder. This is your resistance zone. यहाँ से गिर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ गिर रहा है. तो अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे देता है एंड देन टेस्ट करके हमें देता है, विच इज ऑल्सो दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है. ऑफकोर्स जो पहले एंट्री करना चाहते हैं वो आप मंथली CPR WCPR को यूज करके कर सकते हैं, विच इज हियर. दिस इज योर मंथली CPR. इसके ऊपर जाने से या WCPR के ऊपर जाने से आप कर सकते हो. इसमें और मिनी ट्रेंड लाइंस बना सकते हो, ऐसे कुछ depending on what is your time frame of trading. But this is something that you can keep it in your watch list. अभी poor candles बन रहे, डेली में कंसोलिडेशन हो रहा है, let it break out. That would be my suggestion, to be honest. फिर हम आते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज में. अगेन ये जब से शुरू हुआ है ऊपर गया, करेक्ट हुआ, ऊपर गया, दिस फर्स्ट टाइम अगेन करेक्ट हो रहा है. तो यहाँ करेक्शन पे you had a, well, let me go to the weekly chart. You have a bullish divergence here, weekly ta. ये पहला डाउन टिक है. Now again you need bullishness here, so of course you need to go back to the daily chart, use the CPR and all that to enter. Do your fundamental analysis here properly so that you can enter. Again इस पे सेटअप है, but I think मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. मनोरमा इंडस्ट्रीज को एक बार हटा देते हैं बिकॉज इसका टिक डाउन भी हो गया है, सो इट्स अ लिटिल ऑफ पुटिंग. Orient Electric, of course, you can see my alert is above the previous month's high, which is a nice, doji, a beautiful doji.
तो अगर इसके ऊपर जाता है, दिस इज व्हेन आई एम गेटिंग इन। वीकली चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं, इट्स ऑल डाउन 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 डाउन, सो दैट विल काइंड ऑफ ब्रेक द डाउन 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 ट्रेंड काइंड ऑफ थिंग एंड देन मे बी रिज्यूम ऑन द अपसाइड। सो ये बहुत जरूरी है कि ये अलर्ट बजना, मतलब ये इस लेवल के ऊपर जाना। फिर हम आते हैं वर्लपूल पे। वर्लपूल में भी सिमिलर सेटअप है। वर्लपूल में एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ डाइवर्जेंस था, ऊपर गया, यहाँ पे एट मंथली में देयर वाज अ वीकली बेरिश डाइवर्जेंस, फेल डाउन अगेन। नाउ वंस अगेन यू हैव अ वीकली बुलिश डाइवर्जेंस व्हिच सजेस्ट इफ इट गोज हायर, अगर ये हफ्ता हफ्ता फिर उसके बाद हफ्ता 2-3 हफ्ता ऊपर चले जाए, देन इट इज पॉसिबल दैट यू विल हैव एन अपटिक इन द मंथली चार्ट। अगर वो हो गया, दिल बी अ ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस एंड आरएसआई में भी डाइवर्जेंस हो जाएगा, व्हिच बेसिकली वुड सजेस्ट दैट दिस वुड रिज्यूम ऑन अप ट्रेंड आफ्टर दैट। तो अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये अगर है, लेकिन आप इसको अगेन वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, आप डेली के सीपीआर के ऊपर अलर्ट लगा सकते हो, इसके ऊपर भी एंट्री कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन अगर मंथली टेकअप हो गया तो अगले मंथ हम इसमें जनरली हम इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फिर हम आते हैं एसडीबीएल में। अगेन लास्ट मंथ बहुत सुंदर डोजी है, ईएमए पे टेस्ट है, यहाँ से शुरू हुआ था, पहला बार रिट्रेसमेंट है ईएमए तक, और वीकली में देखिए अच्छा सा डाइवर्जेंस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। इफ आई कम टू द डेली चार्ट, लेट मी रिमूव दीज लाइंस, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश डाउन था, ये 012 है अभी भी। अगर मंथली सीपीआर के ऊपर बंद होता है, दिस कुड गिव यू एन अप मूव। सो अगेन मंथली ईएमए, वीकली बुलिश डाइवर्जेंस, देयर इज अ सेटअप, वेट फॉर 1 वीक, आई थिंक एक हफ्ता, नेक्स्ट वीक में भी कुछ अच्छा बने, तब उसका हाई टूटे, ब्रेकआउट हो, तब उसको इस ये सब चीजों में आप कर सकते हो। सो मेरे ख्याल से एक हफ्ता आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक देयर बी अ लॉट ऑफ कंफर्मेशंस ऑफ दीज सेटअप्स ओनली। एस्कॉर्ट्स भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वीक मंथली वैल्यू जोन पे आ रहा है, वीकली में डाइवर्जेंस है एंड इट इज स्टिल वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। ये हमने 2 हफ्तों से हम इसको डाल रखे हैं आप यहाँ से, एंड यही प्लान है कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे डाइवर्जेंस बना था, फॉल्स ब्रेकआउट, टेस्ट टेस्ट, मंथली सिंगल लाइन सीपीआर आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। ये ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट टेस्ट, तब हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, वरना हम थोड़ा वेट करेंगे। फिर हमने आईडीएफसी के बारे में बात की। पहले हमने कौन सा बात किया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सॉरी, दिस इज आईडीएफसी राइट नाउ। मंथली वैल्यू जोन कंसोलिडेटिंग, वीकली में, वीकली चार्ट खोलते हैं एक बार। वीकली में बुलिश डायमंड था, ये डाउन टिक हो गया। सो अगेन वॉच लिस्ट में है, अपटिक होना जरूरी है। सो वंस देयर इज एन अपटिक अगेन, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगेन प्लान वही रहेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड देन फॉलो थ्रू। इंडिया मार्ट निवेश लास्ट मंथ अच्छा कैंडल बना है एट ईएमए, अगेन हाई तोड़ना जरूरी है। अब ये देखो यहाँ पे भी बना था, मैं पहले इसको वीकली स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इफ यू सी यहाँ पे भी बना था जहाँ पे ये हाई टूटा था, लेकिन यहाँ पे वीकली में डाइवर्जेंस नहीं था, प्लस इसका हाई नहीं टूटा। इस महीने डिसेंट कैंडल, इसका हाई टूटना जरूरी है, लेकिन उससे अच्छा वीकली में डाइवर्जेंस है एंड दिस इज अ पुल बैक। मैंने किसी को ये लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये पुल बैक होता है और डीप पुल बैक होता है तो और अच्छा है, क्योंकि ये 61.8 को टच कर देगा। वही हुआ, आप देख रहे हो डेली चार्ट में, मैं ले जाता हूँ इसको डेली चार्ट में। if you can see, this is a nice pullback at support level and there is a decent setup here. यहाँ पे of course bearish divergence था डेली में, इसलिए नीचे है। अब इसको आपको, अगर ये ब्रेकआउट होता है, now you can put it on the hourly chart also, या आप इसको अगर और अच्छे से करना चाहते हो तो डेली चार्ट में ही इसको अच्छे से ब्रेकआउट करने दो, या एक अच्छा कैंडल ऊपर की ओर बनने दो, एंड फिर इस पे एंट्री आप परसीव कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द प्लान फॉर इंडिया मार्ट निवेश। अभी भी ये अच्छा काइंड ऑफ सेटअप है, और बेस्ट होगा ये शोल्डर, ये हेड, और ये एक और शोल्डर बना के यहाँ से नेक लाइन बनेगा, एंड ब्रेकआउट हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है। नाउ वी कम टू रेन। नाउ रेन में इफ यू कैन सी देयर वाज अ ब्रेकआउट, मंथली चार्ट बुलिश डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट हो गया। वीकली चार्ट में देखो आप, और ये रीटेस्ट हो रहा है। अगर ये रीटेस्ट होता है एंड देन टर्न अराउंड होता है, दैट टर्न अराउंड इज वेयर वी वुड लाइक टू गेट इन, बिकॉज दिस वुड बी अ रीटेस्ट, ठीक है। सो दिस शुड ऑल्सो बी इन योर लिस्ट। देन यू हैव क्वांटम पेपर। क्वांटम पेपर टेक्निकली वैल्यू जोन, यस, वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, अपटेक फॉलो थ्रू लास्ट वीक हो चुका है। इस वीक खुलते ही अभी तक नीचे ही आया है, which basically means that maybe this is a retracement, maybe next week बढ़ेगा, I don't know, but you want it to go higher. Daily CPR तक आया है, अब यहाँ से you want one good candle and then turns around. So I have a question on quantum paper also, so this would be my reply accordingly, right? So this would be
यहां से टर्न अराउंड होना चाहिए, ठीक है, यहां से टर्न अराउंड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए विच इज अ गुड कैंडल एंड ऑल दैट, यू नो अबाउट इट, ऑलराइट। बट ठीक है, वीकली मंथली का सेटअप अभी भी क्वांटम पेपर में है। Then we come to PEL. Now PEL, as said, beautiful, started with a monthly bird here, ऊपर गया, फिर EMA पे आया, EMA doji 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 doji. This month again it kind of touched the same resistance level. You can see in the weekly chart also, same resistance level पे गया, वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, हमें चाहिए डेली चार्ट में, इफ यू कैन सी ये कंसोलिडेट हो रहा है, राइट, हमें चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो जाए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना ही नीचे टूट रहा है, नीचे भी एक सपोर्ट लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ना ही ऊपर टूट रहा है। तो आई थिंक आर्ली चार्ट लगा लो, यहाँ R1 से गिर गया था, अगर आप यहाँ एंट्री थे R1 तक प्रॉफिट था, R1 से गिर गया, नाउ दिस शुड ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड, इफ एंड व्हेन इट डज, इफ इट डज, दैट इज व्हेन वी आर एंटरिंग, अदरवाइज वी आर वेटिंग। फिर हम आते हैं इंडो स्टार, लेट मी वीकली चार्ट में स्विच होते हैं, इंडो स्टार कैप फाइनेंस आई थिंक, एंड यहाँ पे वीकली मंथली में सी स्टार्ट विद मंथली बार टाटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गैप है, उसको एग्जॉस्ट किया है, फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, इसमें प्रॉब्लम ये है खाली यहाँ पे वीकली में बेड बना हुआ है। नाउ वी वुड लाइक दिस टू काइंड ऑफ नॉट फॉलो थ्रू, सो अगला वीक अगर पॉजिटिव कैंडल है देन वी आर गुड टू गो। आप देख रहे हो अलर्ट मेरा कहाँ है, इसके ऊपर है, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर है, अगर आप देख लो, ठीक है, सो दैट इज द अलर्ट दैट आई एम वेटिंग फॉर टू गेट ट्रिगर्ड, ठीक है, ये हमारा प्लान होगा बेसिकली regarding some long-term stock picks. So guys, if you are watching this video, these should be in your watch list according to technical analysis only, all right? The rest of the fundamentals you need to do it yourself, ठीक है। चलो अब हम आते हैं questions पे जो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे, and people who have not yet shared, you can share it on the chat box. So I've got today is M&M and Bandhan Bank, IDBI. All right. So I've got fewer lists today. M&M monthly कुछ नहीं है, weekly ठीक है. So let me switch to weekly here and daily here. Weekly is all right, and daily actually this is a wide monthly CPR, no? So daily EMA early divergence वाला setup पे करना होगा. So daily early divergence है नहीं, monthly CPR पे है, so you can treat it like this, that because it's a wide CPR, you're using if you want to buy, you are going to buy above the narrow weekly CPR, all right? So उसके लिए I mean that is it, उसके अलावा और कोई plan है नहीं इसमें, all right? So let me go back to the daily chart because the monthly wide CPR इसमें नहीं है, यहाँ पे था ये जो M&M था, यहाँ पे at weekly EMA daily divergence, and this was beautiful. But abhi I suppose I don't have anything to say to this. Next is Bandhan Bank. Bandhan Bank at support level, weekly chart, daily chart also. यहाँ पे बर्ड बना था, ये सेंसर था, यहाँ पे 012 का प्रोबेबिलिटी था, अगेन वाइड मंथली सीपीआर है, कंसोलिडेट हो रहा है, कोई भी सीपीआर के ऊपर शायद नहीं गया है ये, है ना, वीकली सीपीआर के ऊपर भी नहीं जा रहा है, मंथली सीपीआर के ऊपर भी नहीं जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ वाइड मंथली सीपीआर, आई थिंक इफ आई हैव अ चॉइस आई वुड इग्नोर these stocks for entry opportunities, for the next couple of weeks at least. Yeah, यहाँ पे कुछ बने, if this is a double bottom or multiple bottom, let it break this neckline. That would give you an opportunity. So what I'm trying to say is let it break kind of this point of interest. ठीक है, ये मेरा प्लान रहेगा इसमें. Let's go to IDBI. IDBI weekly, weekly is all right. Daily MCPR के नीचे यार, so this could actually correct till weekly value zone, give you something and then go up, go higher. All right, so if I look at the monthly chart, so maybe it has turned around, higher highs बना रहा है, but these are all resistance levels. So you need like a setup. अभी हो सकता है बढ़े, लेकिन maybe it's coming back to the value zone. Maybe आपको यहाँ पे bullish divergence या कुछ मिलेगा and then resumes. But and if you have some kind of a knowledge, maybe आप इसको, you can create a triangle here,
you know, and maybe wait for a breakout. अब बहुत you know vortex के पास आ गया यहाँ पे एकदम कोना में, so maybe the breakout will not matter so much, but 0 1 2 3 3 पे यहाँ पे एक divergence बनना चाहिए and then breakout. So yeah, I think I would wait. मतलब अभी अगर मेरे को बोलो क्या करूँ मैं, तो मुझे भी नहीं पता, you know, I would rather wait for some opportunities. Tanla, start with monthly first. Monthly at EMA, that's decent. Weekly, no divergence yet, but resistance tha, tuck. Daily में bullish down, is it 0 1 2? See, if fortunately monthly S1 is at the same level like last monthly S1, ठीक है? So अगर ये यहाँ पे double bottom या एक और divergence daily chart में बनाता है, and then it goes higher in terms of goes above the MCPR, that is when I'm interested. So I would like to put an alert here and then maybe interested in buying this only if it goes higher, right? And अगर मैं hourly chart लगाता हूँ, I think same, yeah, that would be my call on this. All right. Now Aarti drugs. पिंक लिस्ट में तो टू वॉच लिस्ट में है ये मेरा पिंक लिस्ट. आरती ड्रग स्टार्ट विद द बर्ड, ईएमए पे आया, ठीक है. वीकली चार्ट देखते हैं क्विकली. वीकली चार्ट में अभी तक बर्ड बना नहीं. सो मे बी दिस व्हाट दिस इज हैपनिंग, लाइक इफ इट कम्स टू दीज लेवल्स इट क्रिएट्स अ बर्ड, यू नो, आई डोंट नो. बट अभी तो it is, you know, at monthly S1, that is the only positive sign that it has. Otherwise, you know, it is kind of falling below the CPR, so nothing to do here, to be honest. How do I enter a new position here? I'm not sure if I want to kind of buy this or anything. So अगर आप देखोगे यहाँ पे जो gap up था, ये exhausted, tested and it's falling. So, you know, it's a falling thing right now. I'm not sure what to do with this right now. Okay. Gale. Let's do Gale. Gale monthly chart, I think it's all right. ऊपर जा रहा है. वीकली में भी ठीक है. और डेली चार्ट यहाँ पे आप देखो, डेली में बेरिश डाइवर्जेंस सेंसर्ड है, बट R1 पे सेंसर, यू नो, R1 पे भी सेंसर्ड है, तो भी EMA तक आ सकता है. सो एनी टाइम इट कम्स टू EMA, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. So I would wait for it to come to the value zone again. So for example, here, what I'm saying is this is an opportunity to buy, this is an opportunity to buy. Excuse me. All right, so I would wait for it to come to EMA again for any opportunity that I'm looking for in Gale. Okay. Okay. Now, people in YouTube, I've got some videos there as well. IRCTC, I've got some people asking questions here. IRCTC weekly EMA, daily bar. Yes, sure. Well, weekly, daily, maybe. Excuse me. Weekly, daily, maybe narrow line CPR है, इसके ऊपर बंद हो तो better रहेगा. Setup भी ठीक लग रहा है. Monthly में भी I think it started from a decent space. It's all right where it is. So sure, like if I go to like और भी छोटे time frame पे जाते हैं, तो you know, probably use the weekly CPR closing and follow through kind of a setup also. है ना? ठीक है. I think more inclined towards like a bullish setup maybe. But problem is that all the candles are not closing above the CPR. So ये candle closing above the CPR जरूरी है. All right. Then I have Hero Moto. Hero Moto, so monthly of course I'm guessing सब ठीक ही रहेगा, ऊपर भागे जा रहा है. Weekly chart में ये 11 EMA तक आया है, which is the blue line here, and it's going higher. An arrow CPR, sure, मतलब I mean, is it 0 1 2? Is that what you're asking? You know, this 0 1 2 on the downside maybe, but because of RSI in the weekly chart and the kind of setup, the kind of trend it is in, selling would be a little tough, to be honest, in Hero Moto. And buying right now without any divergence for me, it is not possible. All right. So I understand censored भी है, हाँ हाँ ठीक है. You know, CPRs अच्छा follow करता है, so you can probably use CPRs here. But अभी फिलहाल I think wait for a while. Okay. Mahindra Logistics. Mahindra Logistics, you have CPR correction, CPR से entry, just sec. Oops. Oh, यहीं से. All right, so let's look at a bigger time frame, monthly chart.
I wouldn't say this is a divergence, double thing. बहुत ही shady है यार, मतलब I wouldn't say it's a divergence kind of thing in a monthly chart, but I know what you mean, you know, so maybe, I mean very shady, but maybe, ठीक है, तो मैं इसमें भी CPR या कोई एक ट्रेंड एनालिसिस ज्यादा, मतलब एक ट्रेंड लाइन कहीं बने, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने, वो मुझे ज्यादा important. Like for example, here, you know, it goes higher. This is a corrective wave and then falls. Then this is a corrective wave. Will it? You know, that is my question. So I think to confirm any kind of reversal, I think I might have to wait for a little bit more. Okay. Chambal fertilizers. Weekly EMA daily ये 012 हम कर रहे थे, लेकिन वही हुआ, CPR के ऊपर नहीं बंद हुआ. CPR becomes very important. ठीक है, so is this 012 and then maybe entry था yesterday, maybe weekly EMA पे है, ये है, setup है, लेकिन ये मेरे list पे इसलिए नहीं क्योंकि clarity नहीं है setup में, you know. So like for example, if I have to enter now or manage now, so monthly R1 पे है, maybe retreats till weekly CPR and then goes back up higher, that is also possible. लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बनाना पड़ेगा horizontal line जो आपको suggestion देगा. So if I remove my blue lines, right, just so that you know you understand what I'm trying to say here, यहाँ कोई point of interest मिलना चाहिए जो आपको देगा कि यहाँ से ट्रेड करना है, वो मेरे पास अभी है नहीं. इट इज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, बट यस इट इज अगेन, मुझे अगर पूछोगे, इट्स ऑन द बुलिश साइड एंड मे बी यूज द वीकली CPRs फॉर योर बेनिफिट, है ना. सो मे बी यूज दीज ब्लू CPRs फॉर योर बेनिफिट, दैट वुड बी माई सजेशन for Chambal. All right, last BPL. BPL weekly EMA. Let's go to daily chart here. हाँ हो, see this is, I'm guessing this is not a trading stock, okay, because the movement here, ठीक है, इसके कारण ये trading, I don't know how much volume does it have and all that, but if you want to re-enter this for whatever reason, for a particular reason, monthly chart एक बार देख लेते हैं, ठीक है. सो मे बी, हाँ, वीकली में गैप है, ये भी बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसको टेस्ट होना जरूरी है, मतलब इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ था, इसका मतलब ये टेस्ट और एग्जॉस्ट दोनों हो सकता है. तो अगर ये टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यू हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस, तो इसको फॉलो थ्रू होना जरूरी है ऊपर की ओर. माय सजेशन वुड बी, बिकॉज दीज आर ऑल ट्रेलिंग हाइज इन द वीकली चार्ट, wait for it to break the previous week's high with a little buffer, and maybe then only, you know, consider this as a re-entry opportunity. ठीक है, alright guys, thank you very much, that's about it. यही हमने किया है. हम oh, Nifty and Bank Nifty, of course, there you go. Alright, sorry, I absolutely forgot about this. Nifty doing well, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी चार्ट में, वीकली में भी कोई दिक्कत नहीं है. यस, टिक डाउन हो गया है बेरिश डाइवर्जेंस का, लेकिन सेंसर्ड है, कैन करेक्ट टिल 11 EMAs, बट आप देख रहे हो कैसे ऊपर व्हाइट कैंडल्स बन रहे हैं. सो अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है जो मैंने बार बार बोला है कि जो मेरे को निफ्टी से डर लग जाए कि वो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसा अभी तक तो कुछ यहाँ पे बना नहीं है. फिर भी हम इसको अगर वेज की तरह बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, सॉरी, something like this. So this would be my wedge, where यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे if you see my hourly chart, यहाँ पे bearish divergence बना हुआ है एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं होकर CIP दे सकता है. ना अगर ये गैप अप खुलता है on Monday, which is a big possibility looking at the gift nifty that I have, कि बहुत बड़ा possibility कि ये 100-150 पॉइंट ऊपर ही खुल जाए. So not only it will break out on the upside, but that CIP thing will work in your favor, है ना. तो अगर यहाँ पे हम WCPR भी लगा देते हैं, so let me put my WCPR बोल रहा हूँ, sorry, let me remove this and get my future pivots on, है ना. फ्यूचर पिवट्स लगा देते हैं, सो यू कैन सी कि अगर ये ऊपर की ओर ही खुलेगा, सो R1 के पास आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाना. Someone's asking me to check commodities. What commodity do you want to check? Just give me a shout, because gold, silver we've already done and बहुत ऊपर चला गया. So let me know. Now anyway, Nifty में if you can see it is, यहाँ पे अगर खुल जाता है कहीं, यहाँ पे R1 है फिक्स होके, तो be a little careful here.
but narrow weekly CPR है, so you are expecting prices on the higher side. ठीक है, so as I said, अभी तक कुछ bearish शुरू हुआ नहीं है या होगा, ये मानना भी मे बी रॉन्ग होगा. Now बैंक निफ्टी, इंटरेस्टिंगली दिस इज योर प्रीवियस रेजिस्टेंस. ओके, सो अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी से ट्रेल कर रहा था बहुत नीचे. जब बैंक निफ्टी गिरा था, निफ्टी नहीं गिरा था. सो जब बैंक निफ्टी गिरा, ये पूरा कैचअप हो गया, वापस इट हैज कम टू द प्लेस वेयर निफ्टी इज एंड ऑल दैट. बैंक निफ्टी में बेरिश डाइवर्जेंस बने जा रहे हैं एंड वहां पे अब जो टिकअप हो गया, फिर एक अगर टेक डाउन, अगर नेक्स्ट वीक बाई चांस हाइपोथेटिकली खराब हो जाता है, देन बैंक निफ्टी इज बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गया. यू कैन सी दिस राइट, देन इट माइट डू समथिंग. वीकली चार्ट में आप देखो, है ना, सो इट माइट, द कैंडल इज नॉट द बेस्ट बट इट इज रीचिंग इट्स प्रीवियस टॉप, विच इज अगेन यहाँ पे अगर आप स्पाइक देके बेरिश डाइवर्जेंस बना दे, देन थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है. लेकिन ये सब अगर है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. दिस इज नॉट अ बेरिश डाइवर्जेंस. बैंक निफ्टी इट इज ओके, गैप टेस्ट कर रहा है, नॉट द वर्स्ट कैंडल हियर, सेंसर डाइवर्जेंस. सो मे बी इफ इट ओपन्स हियर एंड ये लेवल्स पे टच होता है, देन एक इमोशनल रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर सकता है. और फिर जो रिएक्शन होगा मार्केट में, वो हमें देखना जरूरी है. क्या ये ब्रेकआउट होता है, चेंज इन प्रायोरिटी एंड गो अप, या यहाँ से रिएक्शन क्या आता है, वो देखना हमें ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो निफ्टी बैंक निफ्टी आई थिंक मंडे और ट्यूसडे, दो कैंडल्स, मंडे ट्यूसडे कैंडल्स हमें ज्यादा डिटेल में बता पाएगा कि रेस्ट ऑफ द मंथ क्या होने वाला है. सो मंडे ट्यूसडे हम वेट कर लेंगे. ऑलराइट, somebody wants me to look at crude, so let me just open my M6 layout. Okay, so let's check crude. Sorry about the horrible layout here. Let me just open another layout. Okay, so let's open crude quickly. So crude oil, let's start with monthly chart. थोड़ा late. ठीक है, monthly is all right. Weekly, at EMA, of course, today 4 hours are left for this to kind of get over, and the daily time frame. डेली टाइम में दिस इज अ करेक्टिव चैनल दैट जो मैंने मार्क किया, क्योंकि मुझे बार बार बेरिश डाइवर्जेंस मिल रहा है डेली चार्ट में. सो आई थिंक like if I draw this, okay, it'll make more sense. So let me show it to you on a daily on a 2 hour chart. So अगर मैं ये बनाऊंगा, this is your point of interest. ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है. सो मैं बाइंग सिचुएशन में तब आ जाऊंगा जब इस लेवल्स के ऊपर चला जाएगा. ना प्रॉब्लम है, यहाँ पे आते ही ये गैप डाउन दे दिया, गैप टेस्ट, एंड देन इट इज फॉलोइंग. सो आई गेट like a bullish divergence here in a 2 hour chart and it breaks out. This is why it is such a poor candle formation. White white black, white 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 black, there's no trend, specific trend, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है. तो ये अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है ना, सो लेट मी जस्ट रिफाइन दिस एंट्री, ऐसा कुछ बनेगा. सो अगर ये काइंड ऑफ गैप एग्जॉस्ट होगा ना पहले, फिर ये रेजिस्टेंस टूटेगा, देन आई विल गेट इनटू अ मोड ऑफ फिशिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज. आप मंथली सीपीआर भी देखो, वाइट सीपीआर है, तो ये महीना हो सकता है नहीं करके या ब्रेकआउट एंड ऑफ द मंथ करे, ऐसा कुछ करे. वाइट मंथली सीपीआर इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी फॉर नाउ. ठीक है, so this is the plan for crude. I think it is wait and watch and see when it breaks out kind of a situation for me in crude. All right. Okay, guys. So remember, we come with a new batch on 23rd of March. And till then, we are coming out with beautiful videos for Fly series and everything. So all of you who are following us, or if you're not following us, follow us on YouTube. Watch those videos. And अगर कोई भी commodity stock या किसी भी asset class में आपको analysis चाहिए, put it in the comment box. We'll make sure we do an analysis on that particular stock. All right. Thank you very much. Have a great weekend. Enjoy yourself, and I'll see you next week. Bye-bye. सुनेगा. All right.